Hi everyone, this is Raghav from NLTI, and today we have a very important topic at hand, that is how to cover your current affairs for the CLAT exam. आपको इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज को इग्नोर करना है, we will talk about everything in this video. Now let's just talk about कि CLAT exam टेस्ट क्या करता है in the current affairs section. What exactly does the CLAT consortium expects from you in the CLAT exam current affairs section? So basically CLAT does not test random news. It tests whether you understand important issues and can make sense of them in a passage. So basically they don't expect you to have a knowledge of static GK कि इस modern history में ये कब हुआ, ये कैसे हुआ. Rather, it expects you to put everything in context of the current affair. In GK, CLAT mainly checks why something happened, who was involved, and what exactly changed because of it, and how it affects law, policy or society. So आपको जो हम आज एक फ्रेमवर्क बताएंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. सो दिस इज व्हाई, हु, व्हाट एंड हाउ. सो वाई में आपका आएगा रीजन कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है. हु में आपका आएगा पार्टीज इन्वॉल्व. व्हाट में आपका आएगा द कोर इशू एट हैंड. एंड हाउ में आएगा आपका इंपैक्ट दैट इट विल ड्राइव. सो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट यूएसए वेनेजुएला वॉर. इसमें अगर हम रीजन की बात करें, दैट इज द वाई पार्ट. इट्स बिकॉज दैट यूएस हैज आइज ओवर द oil reserves of Venezuela, since it's the largest producer of oil in the world, since it has the largest reserves of oil. So that is the why part. Who part, अब parties involved की बात करें तो of course it's US and Venezuela. Then talking about what, that is the issue. So what यहाँ पे बहुत ही self explanatory है कि आपका what होगा the war, the conflict that we are talking about. And then how impact that it will drive. Of course इससे क्या impact होगा दोनों countries की economies पे, इस पे क्या एक global effect आएगा. That is the how part. So आपको इसी तरीके से अपने notes बनाने हैं. आपको सब कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये 4 components लिखने हैं: what, why, who and how. अगर आप ये 4 components लिखेंगे किसी भी passage के, you will be 95 to 98% accurate about the questions asked from the passage. Now let's talk about the actual topics which have been asked in the last 4 to 5 years in the GK section. अगर हम लेके चलें 2022 का, so social policy and conflict was the major theme that was asked. So आपका constitutional amendments did not make a major chunk of it. Social policy and conflict was the major theme. इसमें आपका स्पेशल मैरिज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसरो, CSR, द रशिया यूक्रेन वॉर विच हैड रिसेंटली स्टार्टेड बैक देन, एंड द ग्रीन टेक इंडस्ट्री, दैट वाज द मेजर चंक ऑफ द थीम दैट वाज आस्क्ड. 2023 global governance was the major theme pertaining to governors and federal tensions, G20 summit, digital rupee, global trade एंड ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस. सो आपका 23 का जो थीम था वो ग्लोबल गवर्नेंस था. 24 में मेजर इवेंट्स एंड डेमोक्रेसी, जलियांवाला बाग, इजराइल हमस वॉर, चंद्रयान 3 विच हैड बीन लॉन्च्ड बाय इसरो बैक देन, G20 समिट. सो G20 आपका बार बार पूछा जा रहा है, एंड अंबेडकर डेमोक्रेसी स्पीच विच इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन. सो ये आपका कॉन्स्टी हो गया, ये आपके इवेंट्स हो गए, और G20 सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल इवेंट. नाउ 25 में मेजर चंक वाज आस्क्ड फ्रॉम ब्रिक्स एंड रिजर्वेशन. द ब्रिक्स सिचुएशन, जो हमारी एक करेंसी इंट्रोड्यूस होने का
एक बात चल रही थी ब्रिक्स में. Then Article 370, women's reservation, civil disobedience, and Paris Olympics. So it was sort of a mix of all the themes. BRICS आपका आ गया global governance में, Article 370 sort of constitutional amendments question, women's reservation a social key theme, then civil disobedience again from your consti, and Paris Olympics from your global events. Recently in 2026, what has been seen? SCO summit, US India trade tariffs, national security, incidents related to your Divya Deshmukh, Pahalgam, and One Nation. So the key themes for 2026 were your global summits, then US India trade tariff, again a global event, then national security slash incidents like आपका पहलगाम, again sort of a global event, and then your one nation, sort of a consti question. Now again very important slide, static GK, what it means now. So static GK, as we talked earlier, is not directly asked in the exam. It has been used only as a context to current GK. तो let's say अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि the sun rises in the east, so that is sort of static GK. But if I use it as a context कि sun के east में हमारी एक satellite गई है या ऐसा कुछ हुआ है recently, so that fact has been used as a backdrop for current GK. So this is the main thing that CLATs expect you to remember, which are basic facts which can be used as a backdrop for current GK. In all the years, what you can see is it has only been used in the contextual form and not as factual form. So conclusion is this only कि static is still there, but you needed to understand the basics behind a topic, that is to understand the context behind a topic. Now again very important slide, here we are going to talk about how to make perfect GK notes. So we are going to take a key theme, so the topic will be Women's Reservation Act. So here first we'll make a box for issues, then what to write, and then the example. So the first criteria will be core issue, what is being really talked about here. So basically we'll discuss the framework that we earlier talked about, what, how, who and when. So basically आपका framework जो आपके GK notes बनाने में काम आएगा, ये हम आपको एक example के through बताएंगे. So what is this really about? The reason कि not exactly the reason, basically एक उसके basics क्या हैं. What is this really about? Reserving seats for women in legislatures. Again, then we'll talk about the trigger. You can say the reason कि हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं. Why is this in the news? Basically the why part. This will be the what part. Parliament has recently passed the Women's Reservation Bill. That is why it is in the news. So first we talked about what, then we talked about why, and then the stakeholders basically will tell you who all are the parties involved, who is involved. Then here we come to women voters, political parties, parliament and election commission, basically all the parties that is involved in this act. Now again then we talk about the conflict. Basically conflict can again be categorized under the what part, कि conflict है क्या, what is being debated, whether it will improve representation or become tokenism. जो आपका women reservation bill है, whether it's just a part of tokenism और क्या ये genuinely एक change लेके आएगा. Now this direction part can come under the how part, कि how it will affect India's policy and governance. What might change can come under the how part, how it might change. More women MLAs and MPs over time, so this can be the key impact of Women's Reservation Bill. So ये आपका एक तरीका होना चाहिए when you're making GK notes for a certain topic. This can help you study a broader topic under 2 to 3 minutes when you are revising for the same. Now again very important slide, what all are the sources that you can use for your current affairs.
The first one are the newspapers only, the Hindu editorial, the Indian Express. ये आपको एडिटोरियल पढ़ना है, फिर उसको आपको अपने मन में या आपको अपने जो नोट्स बनाने हैं उसको एक्सप्लेन करना है कि जो हमने फ्रेमवर्क की बात की, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन. सो दिस कैन बी द फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज while reading the newspaper. Press Information Bureau, this again can be a key source. Parliament of India website, bills, acts, debates, so this will help you for your consti questions. Then PRS legislative research, bill summaries, policy briefs, and Supreme Court judgment summaries, official judgments plus neutral explainers. ये आपको pages मिल जाएंगे आपके Instagram पे. बाकी in shorts can also be a good source for your revision, for your weekly revision, for your daily revision. आप हिंदू एडिटोरियल यूज करो, आप इन शॉर्ट्स जैसे एप्स को यूज करो, एंड टू रिवाइज इट ऑल एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट यू कैन डू इज यूज अ कंपेंडियम फॉर इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैटल मिस्टेक्स दैट कैन कॉस्ट यू टू मेनी मार्क्स इन द जीके सेक्शन. ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है जो बच्चे फॉलो करते हैं टू ruin their GK section. We'll talk about the major mistakes that you've got to avoid while preparing for this section. So the first and foremost mistake is saving GK for later and creating a huge backlog. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं लास्ट के 1-2 महीने में पूरी 12 महीने की जीके कवर कर लूंगा, मैं कंपेंडियम पे कंपेंडियम पढ़ता जाऊंगा और कवर करता जाऊंगा. बट लेट मी टेल यू, दिस विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक. क्योंकि जब आपके पास 1 महीना बचा होगा और आपके पास 12 महीने की बैकलॉग होगी, दैट विल नॉट डू यू एनी गुड. आप खुद सोचिए, अगर आप 2 महीने के अंदर 12 महीने का बैकलॉग कवर करेंगे तो आपकी जो रिटेंशन है, हाउ बिग ऑफ अ हिट इट विल टेक. सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. जो आपको मंथली जीके रिवाइज करनी है, बेसिकली पहले डेली, वीकली, मंथली. डेली आप अपने जो इन शॉर्ट्स जैसे एप्स है वहाँ से करिए, न्यूज़पेपर से करिए. फॉर योर वीकली रिविजन again refer to the notes that you've made, and for your monthly revision use the compendium that you are using. Thinking I'll cover this on Sunday, this again comes under the procrastination part only. You don't have to do this. Reading news daily but never revising. Again, if you're reading anything which has facts, which has figures, but you're not revising it later, it will not be retained in your mind. Watching 30-minute videos instead of reading 5-minute explainers. देखिए, CLAT is a competitive exam. It's a comprehension based exam. So you are advised to read as much as you can. So it will do 2 things. एक तो आपका revise हो जाएगा और दूसरा आपकी reading speed बढ़ जाएगी. So it's always advised to read instead of watch. So this is something that you can follow. Watching 30-minute videos instead of reading 5-minute explainers. You don't have to do this. Read as many explainers as you can. Collecting 10 PDFs and finishing none. Again a fatal mistake. आपको ये नहीं करना है कि आपके पास हर जगह से PDFs है, हर जगह से compendium है. But now that you've got too confused, you don't have the energy to cover each and every one of them. So this again, following too many sources is one of the biggest mistakes that you can do. Now, trying to mug up facts one night before mocks. Again, each and every one of these problems start from procrastination only. Once you start procrastinating कि ये बाद में कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे, तभी हर प्रॉब्लम आती है. आप एक दिन पहले मग अप फैक्ट्स तभी करोगे जब आपका बैकलॉग होगा. बैकलॉग तभी होगा जब आपका प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल्स होंगे जो वो हाई होंगे. तो ये आपको नहीं करना है. प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगेस्ट थिंग, इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक while preparing for GK. Ignoring GK because it's unpredictable anyway. So ये भी बहुत बच्चे करते हैं कि यार हमें पता तो है नहीं कि GK में आना क्या है, so let's just leave it for the end, बाद में देखेंगे. ये भी एक तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन है, और अगर आप ये करोगे तो you'll lose that competitive edge over your peers, because mind you, GK is the make or break section in your CLAT exam. Legal reasoning, critical reasoning सबको आती होती है, इवन मैथ सबको आता होता है, बट जीके एक ऐसा सेक्शन है जो आपको वो एक्स्ट्रा 6-7 मार्क्स 10 मार्क्स देगा.
over your peers, which can land you a seat in the top 3 or top 5 NLUs. Panicking when a GK passage looks unfamiliar, ये आपके साथ होगा नहीं if you're preparing diligently, if you're reading daily newspapers, if you're making your micro notes based on the pattern that we've told you, what, how, who, when, and if you're revising it at the end of each and every month using a compendium, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आनी चाहिए. Now let's talk about what you can skip to control your GK backlog. जो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, जिनकी probability near to zero है to being asked in the CLAT exam. Now what you can skip is random awards and trivia. Again, it's not a key theme, awards and honors, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है. What you can do instead is 30 minutes of daily GK revision. What you can skip, long dry history timelines, जो आपकी बिल्कुल ही एक स्टैटिक हिस्ट्री में चला गया, जो फैक्ट्स हैं उनको आप स्किप कर सकते हो. And what you can do instead is make short usable notes. Celebrity or entertainment news is somewhat you can skip, cause ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता है CLAT exam में, which we have analyzed using the PYQ patterns. And what you can do instead is revise once every week. Random sports facts. सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरीज मारी हैं, विराट कोहली ने कितनी सेंचुरीज किस ईयर में मारी हैं, कितने रन्स मारे हैं. सो दिस इज अ रैंडम स्पोर्ट्स फैक्ट. इसका कोई एंड नहीं है अगर आप इसमें घुसेंगे. सो दिस इज अ थीम विच यू कैन स्किप. एंड व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक योर कॉन्स्टी, लाइक योर वर्ल्ड अफेयर्स. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इंस्टेड. What you have to skip next is parks, dams, rivers, national आपकी bird sanctuaries, parks, ये सब आप skip कर सकते हो. And what you can do instead is drop low value topics early. So this is better to do. अगर आप ऐसे topics को पहले ही छोड़ दोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा. Now ancient history details is somewhat you can skip. आपका मोहिंजोदारो और ये सब आपका एंशियंट हिस्ट्री में आ गया, ये आप स्किप कर सकते हो, जो आपकी सिविलाइजेशन वाली हिस्ट्री है. दिस इज समवॉट यू कैन स्किप, कॉज मॉडर्न हिस्ट्री इज यूज्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट, एंशियंट हिस्ट्री इज रेयरली यूज्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट. एंड व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज, और व्हाट्स बेटर टू डू इज कीप नोट्स इजी टू रिवाइज. सो एक लास्ट हम क्या स्किप कर सकते हैं, लोकल न्यूज़. आपके कोई भी एरिया में क्राइम्स, मर्डर्स, कुछ ऐसा हो रहा है, सो दैट इज समथिंग विच डज नॉट अफेक्ट इंडियाज पॉलिसी एंड इंडियाज गवर्नेंस वेरी डायरेक्टली. अगेन अगर ये कुछ बड़े लेवल पे हो रहा है तो इट कैन अफेक्ट अ स्टेट्स पॉलिसी और इट कैन अफेक्ट अ स्टेट लॉ एंड ऑर्डर. बट अगर आपके लोकल एरिया में कुछ ऐसा हो रहा है और उसकी जो अकरेंस है दैट इज not very frequent, so this is what you can skip. And what you can do instead is stick to national and global issues like wars, conflicts, जो हमारे let's say US वेनेजुएला का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल हमस का वॉर चल रहा है. So global conflicts पे you can instead put your focus. So this is a very interesting slide. That is how to actually connect your GK with legal reasoning. इससे दो चीजें होंगी. इससे एक तो आपकी लीगल रीजनिंग भी स्ट्रांग होती जाएगी साथ साथ, और दूसरी चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा किसी भी जीके के करंट अफेयर को पढ़ना. नाउ don't read GK like news, read it like a future legal problem, because that's what you are going to solve in the future. So read it as a legal problem. अब इसको कैसे कर सकते हैं? So while reading GK, ask who is being affected. Again, the parties involved. ये आपके लीगल में कैसे काम आ सकता है? जब आपको पता होगा कि who all are the parties involved, it helps you spot the plaintiff or the defendant type roles. अब इसमें प्लेंटिफ क्या है किसी सिचुएशन में, या फिर उस सिचुएशन में डिफेंडेंट कौन है, अगर आप इसको एक केस की तरह देखोगे तो आपको ये नजर आएगा. The second thing what you can do is you can just write who has power here. Again comes under the parties involved, basically under the who part. इसमें आपको पता चलेगा कि is it an individual conflict or is it a class action type of a thing.
and it will help you to clarify authority versus individual conflicts. Now, what is being restricted comes under the what part or the reason part. It will help you to train rights versus regulation thinking. So आपके जो rights की knowledge है, regulations की knowledge है, basically कौन सी की knowledge है, ये इससे strong होगी. Who benefits, who loses, basically how, and a part of who. So basically क्या impact आ रहा है इसका. That will help you sharpen your fairness versus legality analysis. Is it fair? Is it legal? The debate between the two. So this is the criteria that will help you decide. What could people fight about? Basically comes under the what part or the reason part. It will help you to build your legal dispute instinct. तो basically कोई भी legal dispute हो रही है तो आपका एक common sense, आपका एक legal IQ बन जाएगा to think about a solution for that dispute. Now, how to build this link daily? While reading GK, ask which right is involved here. आपका कौन सा जो right है fundamental वो यहाँ पे use हो रहा है. Who is being protected? Basically, who all are the parties involved? Who is being protected or restricted? And what kind of dispute could arise? Basically, what? This is who and this is which. तो ये हमारे 4-5 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली व्हाट, हु, हाउ, विच. अगर आपको ये 4-5 पैरामीटर्स की नॉलेज है अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन तो यू मोर और लेस नो 95 to 98% अबाउट द सिचुएशन. सो ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको लेके चलना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सर्टेन स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ GK can be handled. Number one is GK not something you finish, it's something you slowly get better at. So you don't need to panic, you need to be patient with this section cause आप daily कुछ नया पढ़ोगे फिर आपको पुराना भूल सकता है, फिर आपको ये लग सकता है कि यार मैंने तो ये कवर ही नहीं किया है. तो you need to stay calm, you need to stay patient while preparing for this section. Give it 12 to 15 minutes in every mock. You don't need to just rush through this section. Try to give it 12 to 15 minutes in every mock. Don't panic when a passage feels unfamiliar. Of course, I mean, there are endless current affairs, endless general knowledge in the world. You cannot know everything at one point. So you don't need to panic when you see an unfamiliar passage. After each mock, note the GK topics you did not understand or you did not know. So this is one of the most important things that you can do, which will help you to retain the data set, to increase the amount of elements in that data set. Basically अगर आपको आज मॉक देने से पहले एक न्यूज़ आती है तो मॉक देने के बाद आपको 4 न्यूज़ आती होंगी, क्योंकि जो 3 न्यूज़ आपने पहले नहीं करी होंगी उनको आप नोट डाउन करोगे फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. So take the mocks as learning only, as a learning phase only. Don't take it as that this is the final CLAT exam और pressure में नहीं लेना उसको अच्छे से analyze करके you've got to note the GK topics which you did not know about. Study those topics the same day. Again, if you've noted down the topics, you need to study them, you need to revise them the same day. And at NLTI, how we can help you is we have a study buddy system wherein there are just 5 people in one group and you guys are mentored by an NLS mentor. तो study buddy का ये फायदा रहता है कि हर बच्चा on a daily basis he or she can send 10 current affairs, 15 current affairs, 20 current affairs. So at the end of the day we have a pool of 100 current affairs. So now instead of 20 you've got an extra 80 current affairs waiting for you to be prepared. So thank you so much everyone. I hope you found the video valuable. I hope you prepare for this section diligently and based upon the framework that we have given you. And I hope that I see you on the other side. I wish you all the best. Thank you.